Hello everyone, welcome to yet another exciting episode of जी बिल्कुल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त चंदन बिस्वास और इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क बिल्डिंग के टूल्स। साथ ही साथ हमारे एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं सुमेधा परीक, जो आपको अपने इनसाइट्स बताएंगी। शी इज अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Madras in biotechnology and she will tell you about her story. I would like to thank you guys from the bottom of my heart. मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि आप लोग इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, but I'm so glad you liked it and I hope I can continue improving the work more and more. I also plan to maybe the second season might be on YouTube as well as on Spotify so that you can see and meet the guests live and you can put on your comments as well. So let's jump right into it and start the episode 5 of this season of JEE Bilkul podcast. नेटवर्क बिल्डिंग के टिप्स। आपने कभी टॉमी द लायन की कहानी सुनी है? टॉमी अपने बचपन में अपने झुंड से अलग हो गया था एंड ही एक्चुअली एंडेड अप इन अ फ्लॉक ऑफ शीप। वो शीप के साथ ही बड़ा हुआ और नेचुरली अपने आप को भी शीप ही मानने लग गया। वन डे टॉमी ने एक शेर की दहाड़ सुनी। बाकी सारे झुंड वालों के साथ वो भी भागने लग गया अपने जान को बचाने के लिए। फिर जब वो गुर्राने वाला लायन टॉमी के पास आया और एक फुल्ली ग्रोन लायन को देखा जो कि एक शीप की तरह ही बिहेव कर रहा था, उसने टॉमी को उस झुंड से अलग किया और उसको एक्सप्लेन किया कि टॉमी एक भेड़ नहीं है बल्कि एक शेर है। बट टॉमी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। आफ्टर ऑल उसने अपनी पूरी जिंदगी ही भेड़ों के साथ बिताई थी। इवेंचुअली वो शेर टॉमी को एक तालाब के पास लेकर गया और उसको दिखाया कि देखो वी बोथ लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तब जाके उसको ये बात का एहसास हुआ। ही हैड बीन फॉलोइंग अ शीप सिंपली बिकॉज ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ द फ्लॉक। आपने ये कहावत भी बहुत बार सुनी होगी कि a man is known by the company he keeps। इस कहावत की और भी वेरिएशंस है, लाइक द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो इस तरह के प्रोवर्ब्स आपके लिए क्यों एप्लीकेबल है? ये इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि आप जब किसी ग्रुप में रहते हो आप अपने आप को भी ग्रुप के बाकी मेंबर्स की तरह अपने आप के बिहेवियर को मोल्ड करने लगते हो। वो इसलिए क्योंकि आइदर आप उस ग्रुप के लीडर हो या फिर पीयर प्रेशर। क्या आपको आयरन और एक मैग्नेट के बीच का मेजर डिफरेंस पता है? दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। हर एक आयरन का एटम खुद में एक मैग्नेट होता है विद अ साउथ एंड अ नॉर्थ पोल। अब अगर ऑर्डिनरी आयरन के पीस में अगर ये एटम्स रैंडमली अरेंज रहे विद ईच नॉर्थ पोल बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय साउथ पोल एंड वाइस वर्सा, उससे क्या होता है कि एटम्स के जो लूप्स होते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लूप्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और फिर उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिहेव नहीं होती हैं। लेकिन आप जब उसी आयरन को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट के आसपास रख देते हो तो सेम पीस ऑफ आयरन बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट बट लूजेस दैट प्रॉपर्टी एज सून एज द मैग्नेट इज रिमूव्ड। एक परमानेंट मैग्नेट को भी आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हो व्हेन हीटेड और स्ट्रक वेरी शार्पली। So this is a great analogy to bring in your attention that bright and successful people can also align your thought processes and their habits in their own direction। एक सही कंपनी आपको ग्रेट ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है एंड एट द सेम टाइम इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि एक रॉन्ग कंपनी आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। क्लासमेट्स को इसीलिए बहुत ही ध्यान से चुनना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे ही दोस्त हैं जो हर समय मूवीज, गेम्स, टीवी शोज इनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं और उनके प्रेजेंस में आपको अपने स्टडी पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको ये अपना ऑर्बिट चेंज करना होगा। ऐसे क्लासमेट्स के साथ उठना बैठना शुरू करिए जो एक्चुअली बहुत एम्बिशियस है। ग्रुप स्टडी उन्हीं के साथ कीजिए जिनकी प्रिपरेशन की लेवल ऑलमोस्ट आपके जैसी है, ताकि आप लेसन्स को डिस्कस कर सकें, एक दूसरे के डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकें, शायद क्वेश्चन पेपर्स भी आप अरेंज कर सकें और उसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं टू एस्टिमेट प्रोबेबल क्वेश्चंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने उन दोस्तों को फोरसेक कर दें जो स्टडीज नहीं है। आपको सिंपली उनको अवॉइड करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी नेटवर्क। आई एम नॉट सेइंग जस्ट डिस्कार्ड देम, ओके? टीचर्स भी एक बहुत ही ओवरलुक्ड रिसोर्स हैं आपके ग्रोथ के लिए। मोस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही हिचकिचाते हैं टू सीक टाइम ऑफ टीचर्स आउटसाइड द क्लास और मे बी इवन आस्किंग क्वेश्चंस इनसाइड द क्लास। उस हैबिट को चेंज करो यार। मोस्ट टीचर्स आर हैप्पी टू असिस्ट देयर स्टूडेंट्स, चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे वो क्लास के बाहर हो। उनको ये पता हो जाए अगर कि बच्चा सिंसियर है बट मे बी अगर क्लास में उसका ध्यान नहीं था। एक बहुत ही ओवरलुक्ड पॉइंट इसमें यह भी है द वैल्यू ऑफ टीचिंग अदर्स। आपका जो ब्रेन है वो कुछ इस तरह के फाइबर पाथवे से बना है जिसमें ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हो, न्यू फाइबर्स जिसको हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग इन द एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स। इसके बारे में आपने जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में। जैसे जैसे आपके डेंड्राइट्स ग्रो होते हैं
वैसे ही उनके कनेक्शंस भी और क्रिएटेड होने लगते हैं। इनको साइनेप्सिस कहते हैं। ये साइनेप्सिस और स्ट्रॉन्गर और थिक होते जाते हैं जैसे कि आप डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हो। जितने ज़्यादा आपके सेंसरी ऑर्गन्स लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक साइनेप्स बनेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। हम लोग इजीली स्मेल्स को रिकॉल कर सकते हैं, टेस्ट को रिकॉल कर सकते हैं, गानों को रिकॉल कर सकते हैं ऑलमोस्ट एफर्टलेसली, राइट। इजीली इस बात को भी रिकॉल कर सकते हैं कि कौन सी बात हमें अच्छी लगती थी, कौन सी अच्छी नहीं लगती थी, कौन सा हैप्पी है, कौन सा अनहैप्पी एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, कौन सा कॉमिकल एक्सपीरियंस रहा है। ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी न्यूट्रल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं अपने स्कूल से घर से वापस आना जाना कर रहे हो, इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें इट्स नॉट एब्जॉर्ब, राइट। मोस्ट ऑफ आवर लेसन्स वो सिर्फ वर्ड्स ही होते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, मे बी टीचर्स के द्वारा बोली गई बातें होती है, हर्ड और रिटन बाय अस। लेकिन हमारे ब्रेन की जो मेमोरी होती है वो पिक्चर्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट, टैक्टाइल सेंसेशंस, एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में हमारे दिमाग में बैठी रहती है। इसलिए हमें वर्ड्स से हमें पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है सो दैट उन पिक्चर्स को अपने दिमाग में हम बैठा सकें। बिकॉज ह्यूमन्स आर नॉट अ क्रीचर ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस तो बहुत बाद में डिस्कवर हुई। आपने देखा होगा कि आदि मानव जो होते थे वो वॉल्स पे पेंटिंग ही बनाया करते थे, राइट। बिकॉज द विजुअल पावर इज सो इंटेंस एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द थियरी विच वॉज क्रिएटेड बाई एडगर डेल। इस थियरी को कहा गया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इस थियरी में एक आर्टिकल है फ्रॉम 1967। इन्होंने इस थियरी को कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 1999 में उन्होंने इस चीज को रिफाइन किया था। इस फ्रेमवर्क में उसने ये एक्सप्लेन करा कि 5% ऑफ व्हाट वी हियर इन लेक्चर्स, 10% ऑफ व्हाट वी रीड, 20% ऑफ द ऑडियो विजुअल मटेरियल प्रेजेंट, 30% ऑफ व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक लाइव डेमो, राइट, 50% ऑफ व्हाट वी डिस्कस, 70% of what we practice by doing, and 90% of what we teach others are some things which we learn. सोचिए इस वेरिएशन को आप कितने इंपॉर्टेंट तरीके से अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो। किसी भी चीज़ को लर्न करने का द बेस्ट तरीका होता है बाई टीचिंग अदर्स। सेकेंड थिंग इज बाई प्रैक्टिस, बाई डूइंग इट योर सेल्फ। अब इसे प्लीज़ इसको आइडियल ट्रूथ मत मानिए, इट इज़ नॉट। बट ये इस बात को ज़रूर फोकस करता है कि हम जितना ज़्यादा अपने सेंसेस को एब्जॉर्ब कर सकें किसी एक पर्टिकुलर टास्क में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न। इससे ये ज़रूर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी एबिलिटी टू लर्न इम्प्रूव्स वास्टली व्हेन यू इन्वॉल्व मोर ऑफ योर सेंसेस। ये आप अपने क्लासमेट्स को टीच करके भी देख सकते हो। You can also teach the same lesson to maybe a family member who does not know anything. The mere act of explaining or teaching has an incredible effect of the level of your learning. So, that's why you should not be shy about approaching teachers or being associated with like-minded, studious classmates. And that's my advice to you for this week regarding network building. Your network should be comprised of the valuable people which should turn your life around, truly. आज के मेहमान इस एपिसोड में आज मिलिए सुमेधा पारीक से। शी इज ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड करंटली परस्यूइंग हर PhD इन MD एंडरसन रिसर्च सेंटर इन ह्यूस्टन, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए बात करते हैं सुमेधा से। हाय सुमेधा, वेलकम टू द शो। थैंक यू चंदन फॉर इनवाइटिंग मी। सुमेधा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। कुछ अपने बारे में बताइए, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं और व्हाट्स योर बैकग्राउंड, लाइक व्हाट आर यू करंटली परस्यूइंग एंड फ्रॉम वेयर यू कम, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैंने IIT मद्रास में बीटेक किया बायोटेक्नोलॉजी में, बीटेक एंड एमटेक, सो 5-year dual degree, and I came to US for pursuing my PhD at MD Anderson Cancer Center. That's amazing. Cancer research is a great field to be in. How were the experiences in biotechnology department? Because many of our listeners उनको पता नहीं होता है कि biotechnology में क्या क्या होता है, and what are the scopes in India and outside India which you experienced?
जब मुझे बायोटेक्नोलॉजी मिला था आईआईटी मद्रास में, मुझे एक्चुअली चाहिए नहीं था बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग जेई सब लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, बायोलॉजी ज़्यादातर लोगों ने लिया नहीं होता है. मुझे रियली मेटलर्जी चाहिए था विच वॉज वेरी एक्साइटिंग टू मी. लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी मिला सो आई वॉज लाइक ओके विद लाइफ. बायोटेक्नोलॉजी मैंने काफ़ी रिसर्च किया था फिर जाने से पहले, लोगों से पूछ के, मेरे भाई के फ्रेंड्स से पूछ के जो ऑलरेडी आईआईटीज में थे कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है. तो उस टाइम पे हर कोई यही बोलता था कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप आउटसाइड ऑफ इंडिया ही है, इंडिया में ज़्यादा रिसर्च नहीं है, इंडिया में तो जॉब ही नहीं है, और बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप रिसर्च में ही ज़्यादा है, विच इज़ टू एन एक्सटेंट नॉट रॉन्ग. लेकिन जिस तरीके से आईआईटी मद्रास में पढ़ाया था हमें, अब काफ़ी करिकुलम चेंज हो चुका है, पर हमें जब आईआईटी मद्रास में जब हमें बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारा करिकुलम था, दैट वाज मोस्टली साइंस बेस्ड, नॉट वेरी टेक्नोलॉजी और नॉट वेरी इंजीनियरिंग बेस्ड. मोस्ट ऑफ आवर प्रोफेसर्स वर फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड एंड दोज हु वर डूइंग सम टेक्नोलॉजी वर फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. 4 साल ही हुए थे बायोटेक्नोलॉजी को चालू है, तो हम लोगों के लिए स्कोप हमें ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया था हमने. बट there were professors who were doing cell biology, cancer biology, which is a very prominent field if you have a biotechnology background. So I ended up actually working on cancer biology. लेकिन अब जो curriculum है उसमें there's biophysics, there's bioinformatics and they put a lot of emphasis. हाँ, उन topics तो ऐसे नहीं है कि 4th year में आपको पढ़ा रहे हैं. They are also teaching these courses in your 1st, 2nd year. तो सुमेधा, मुझे बताइए कि व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, जब आपको कुछ पता नहीं था कि हाउ आईआईटी इज एंड यू वर इन डिलेमा कि हाँ कैसे क्या होता है, यू वांटेड टू एक्सप्लोर. व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन जनरल? A good thing actually for me was that my elder brother was already in IIT. Yeah, he was a good mentor for me. He could tell me his challenges that he faced so that I don't do the same mistakes as he did. So one of the most important things he told me was to not hesitate asking questions in the class. If I don't understand a topic, I should not hesitate to ask the teacher to help me understand it, which is something I think a lot of girls especially face. There's always like 1 or 2 guys in the class who'll just get up in the class and ask question कि sir ये तो समझ में ही नहीं आया हमें. They have like good confidence, but girls are mostly like, oh I didn't understand but maybe I can try and look at this topic myself or ask somebody's help. But many times they don't ask for help also and they end up not learning that topic at all. That is not good. That was one of the most important things my brother advised me, which I actually tried to implement as much as I could. Asking for help, asking my friends for help, asking teachers for help. I didn't hesitate from that. One more thing I would like to ask कि how many hours did you study? Let's say for self study कितने घंटे करते थे? Because many people have no idea कि ideally कितने घंटे पढ़ने चाहिए. What do you think? How many hours should someone study every day for JEE? So more than the number of hours you need to study, I focused on the number of hours I need to sleep because that is very important. And the rest of the day, obviously, like when you are very serious about JEE, you end up spending most of your time in studying. And I was not a very athletic kid or a lot of co-curricular activities, so I was only studying and sleeping. The only 2 things I was doing. So I would sleep for 7.5 hours. It doesn't matter if I'm sleeping at 12, if I'm sleeping at 10, I would just wake up 7.5 hours later and study as much as I can for the rest of the day. Solve all my daily practice problems. Not full focus. I don't have a lot of focus when I study. I get distracted very easily. So for me, if normal person can study something and understand in 2 hours, I'll probably take 3 hours or 4 hours to understand it. I mean, I'm doing PhD. I'm still studying. Yeah. So even if it takes me long hours, it's fine with me. It's like डूब के पढ़ना. That's that sort of feeling. That is a liberating thought itself. Yeah, that's great. So Sumedha, how was your experience in IIT and what are the things which you realized that IIT is worth? Because people want to know your first-hand experience of IIT. IIT मेरे लिए काफ़ी बड़ा सपना था जब मैंने तैयारी चालू की थी. My dad is in a business which requires you to give some exams and you can start doing non-destructive testing. You can have your own business. So my dad does that and I told him that if I don't get IIT, I'll join your business and just do that because I don't want to do anything else. So I just was very passionate about it and I think IIT has benefited me a lot. I wouldn't say
academically or career-wise, IIT has been a label because I'm in a field where a lot of people don't recognize what IIT is. So it doesn't matter to me, oh, ye to IITian hai, kind of things that happen to you when you are in computer science or mechanical, where people recognize, like even internationally people recognize that you are an IITian. But most doctors or professors I work with have no idea outside of science what happens. So they don't recognize IIT. But personally, I have benefited a lot because I got to experience living with the most brilliant minds I have ever seen in my life. I think most of the things that I did were not because of my own capabilities, but they were because I was among people who were just dreaming high, who had the biggest ambitions and the biggest dreams. So when you are already in a pool of people who are dreaming so high, it is easier for you to aim that and achieve it. If you are in a pool of people who are like dreaming ki acha job lag jayega and that's enough for me. Most people I met in IIT were not like that. They were always like dreaming, achieving and aiming high. So it's very easy. And I feel like I'm not the most intelligent person. There's many people who are from different colleges who are as intelligent or even more intelligent than me. It's just the peer that creates a difference, I think. And I think IIT helped me in that way. Strong network which follows me until now. When I came to Houston, the first person I contacted was a college senior because I saw that she's on Facebook and she's over here. And through her, I met so many people who were from IIT Madras. And then through them, I met a lot of people who were from other IITs. And there's just this lifelong bond that you share. When you write JEE and when you study in IIT, it's like this lifelong bond that you share with everybody who's gone through this. So we are just instantly friends. We just instantly connect and we are a huge network of people that are here. I think that should inspire a lot of listeners और वो भी आपसे बहुत inspire होकर के they would be dreaming high. सुमेधा, last segment में पूछना चाहूँगा कि what are the top 3 do's and don'ts which you like to recommend, because JEE is already happening and this time apparently they are having 4 chances of JEE due to COVID times. So they have got extra benefit of trying 4 times in the same year. So what would you like to share top 3 do's and don'ts according to you? I think one of the most important things is to ask for help if you don't understand something. ऐसे सोचना कि ये कोई बात नहीं, ये एक टॉपिक है, वो एक टॉपिक से वो 10 टॉपिक बन जाता है. And then you don't feel confident. So it's not about that topic itself, but it's also about the confidence कि हाँ मुझे जो पढ़ा है मुझे समझ में आता है. At one point of time in my notes from classes, I knew every single page and what was written on every single page. That really helped me gain confidence. Second is, I think I wanted to say something about discipline. Making it a habit to study for this many hours, to solve all the problem sheets and the daily practice problems, solve all of the problems. I think I would diligently do all of that. That helped me gain confidence basically कि हाँ मैं ये सब कर रही हूँ. If you are behind on it, I can catch up, but I wouldn't go like हाँ मेरे को solve नहीं करना है. It's just like internal motivation लाने के लिए भी you need some evidence. And I think the third thing I want to say is believe in yourself, because I did not believe in myself at all. This happened 13 years ago. I still remember it because it was significant. There were 3 questions in chemistry paper that I marked correctly, but I did not fill them in the answer sheet because I was scared that they are wrong and I'll get negative marks. But all 3 of them were correct and they were worth 9 marks. And you know how 9 marks can make your rank move from hundreds. And I was also like the lower end. I was 2,925. So 9 marks would have taken me to like 2,500 maybe. It's not a problem. I'm in a very good place right now. But what would life be if I had written those 9 marks? I probably wouldn't be doing biomedical sciences. I would probably be doing something else. I'm very happy with this. I think it was for the best, but it's just that I didn't trust myself. Another thing that happened was that I was very nervous about IIT. AIEEE used to happen, I think, a couple of weeks after IIT. So by then, I already knew that I am going to IIT.
So I was just like, I had no care in the world. I was very happy. I was confident. तो मैं अपना AIEEE एग्जाम देने जब जा रही थी तो I didn't even take my admit card with me. हम लोग कोटा से जयपुर जा रहे थे क्योंकि जयपुर में देना था एग्जाम. Like we came 5 kilometers from the house and my father just randomly, asked me, you have any pencils or pen with you? I was like, वो तो मिल जाएगा. I didn't take anything. He was like, do you have your admit card with you? I was like, shit, no. I don't have my admit card either. I was just very confident and happy, and I got 2200 rank in my AIEEE. Yeah. So I was just thinking that I was such a happy, confident kid when I was writing the AIEEE exam. But if I had been the same in IIT, maybe I could have gotten a better rank. 9 marks could have completely transformed the course of your life. Can you imagine that? Such things, like, they shape your life so much hugely. People don't realize, in fact. These kids are like always scrolling through the Instagram feed and maybe हो जाएगा. But they just realize कि 9 marks और एक admit card का छूट जाना, they can go at full swing in life and you can completely land somewhere. You should seize the chance when you have it. That's the main thing, I think. हाँ, हमारे टाइम पे ये सब नहीं था. फेसबुक मैंने अकाउंट अपना रिजल्ट्स के एक दिन बाद बनाया था. So तब I was like, okay, now I can start connecting. I can have a social life now. I was just completely very introvert. I had forgotten how to talk with people. मैं नमस्ते भी करना भूल गई थी. I had forgotten कि कौन क्या है, कुछ भी नहीं पता है. That's not something everybody has to do, but I was that kind of person. अगर वो नहीं किया तो मतलब hard work नहीं किया है. I was constantly questioning myself. I don't want to give too much advice because there's also a learning process. So I understand myself better now. That's important. Don'ts में I think I'll just say कि आपका first 10 minutes, if you break your head on a hard question, then I think you'll be very underconfident and you'll probably get scared. मैं सबसे पहले पेपर खोल के सारे पेजेस चेक कर लेती थी कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं. केमिस्ट्री would give some confidence to me, I think, क्योंकि केमिस्ट्री हो जाता था, या तो आता है या नहीं आता है. हाँ, so I could quickly do सारे questions and gain some confidence and then go to like physics and both strategy. Up I think over 2 years you understand yourself better and you can develop that कि मुझे कौन सा subject मेरा strong है, कौन सा second strong है, ऐसे. Those couple of years I spent in preparing for IIT were one of the hardest that I had ever worked in my life. I am very thankful for that 16-year-old self who was very ambitious and passionate and just wanted to get it and nothing else. Such a great motivational talk from you, Sumedha. I hope मेरे listeners बहुत सीखेंगे आपकी बातों से. Thank you so much for joining the show, Sumedha. It was a wonderful talk. All the best to all the kids, and if anybody needs any help, you can always contact me. Thank you so much, Sumedha. Bye-bye. Bye-bye. So that brings us to the end of episode 5 of season 1 of JEE Bilkul podcast. I hope you enjoyed this episode and the discussions and the stories from this episode. Do share this episode on your social media and follow the channel. साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप अपने valuable suggestions and questions related to your preparation you can ask me on the link given in the description of this episode on Spotify. साथ ही I have also included Sumedha's LinkedIn profile. If you want to contact her for some suggestions, you can also reach out to her. That's all we have for you this week. We will be back next week with a brand new episode and a brand new guest in this show. All the best to everyone who are appearing for JEE Main this time, and we wish them all the best. Until next time, see you around.